So today start from fluid cast. So fluid cast is simple also. It is formed by erosion and backfilling. The cast हमें कहते सब जगह erosion और backfilling रही पारियो. So it is formed by erosion and backfilling. Then कोटी erosion पे मैं normally देखती हूँ जो हमारा कि ब्रिज रो पिलर उरा था ब्रिज रो पिलर रे देखो जो डायरेक्शन में पानी फ्लो करथो सपोज एटा पिलर रहला ठीक है वाटर ए डायरेक्शन में फ्लो करछि ए जो जगह गुरा कोन हेता इरोड हे जेते अधिक से जगह रे सब पानी अकुमुलेट कर रहता जो सुखी जाइतो देखियो पिलर पाखटे पानी थियो पिलर पाखटा ही गात हेतिबो यदि फ्लो पाखरे तुम कौन से ऑब्स्टैकल थयो माने फ्लो पाखरे यदि किसी में ऑब्स्टैकल थयो माने से जगहटा अधिक इरोजन हबो से जगहटा को हबो अधिक इरोजन हबो सो एटा कोन पई प्रोड्यूस हुए इरोजन अराउंड एन ऑब्स्टैकल तो ये वाला स्ट्रक्चर सब पाइबा ये जगहटा गोटे एमती रिज भला थिबो हला तो ग्रेजुअली एटा को आइथबो एमती फ्लेयर आउट जस्ट लाइक ए नोज जो वाला नोज देखछो कि हमर एपटा को अछि रिज अछि तापर धीरे धीरे तार हाइट को होछि कमी के मिसी जाउछ तो ए जगह रे भी ये जो स्ट्रक्चर उरा प्रोड्यूस होछि एटा को हमें कहंती बल्बस नोज So it has a bulbous nose. जोटा कि गोटे bulbous nose थाए gradually flares out in downstream direction. तो एमती तुमरा ये जगहटा रिज है धीरे धीरे तार हाइट कमी जीव जोटा कि रिजेम्बलेंस है नोज टाइप ऑफ स्ट्रक्चर तो ये जान करेंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन तामाने इट इज एन एक्सेलेंट कोई परिबो इट इज एन एक्सेलेंट पाइलो करेंट इंडिकेटर तो जो बल्बस नोज पार्ट अछि सो बल्बस nose indicate upstream side. The bulbous nose it indicates the upstream side. So fluid cast simple जोटा कि तुम्हारा ग्रुप कास्ट पड़ला जे वाला से वाला तुम्हारा प्रोसेस मैकेनिज्म सेम बट सेडी ग्रुप कास्ट रे हम कहउतला कि कोनोसी सब ऑब्जेक्ट इट वाज ड्रैग्ड along a cohesive sediments to produce a linear depression एठी तुमर इरोजन होबो बिकॉज़ ऑफ एन ऑब्स्टैकल जो इरोजन होबो जेतरे वेलोसिटी ऑफ द फ्लो डिक्रीज करिवो दैट विल again undergo deposition to produce this type of structure so it is called as erosion and backfilling structure total तुमरा फ्लूइड कास्ट जोटा कि यूज हुए फॉर पाइलो करंट डायरेक्शन बा पाइलो करंट तुम जाने पे यूज कर then comes to marking by erosion so marking by erosion also those are called as tool mark कौन कहते हमें टूल मार्क बोली कहते so इतरे पूरा सेडिमेंट रे ट्रांसपोर्ट हुए along the bed और डिफरेंट प्रोसेस रे सेडिमेंट सल्टेशन थिबो कि सस्पेंशन थिबो से बेड रे कोन बाडे ही कि घसी ही कि जीवो तो से अनुसार से माने बेड रे कोन करथि मार्किंग क्रिएट करथि so बेड रे कोन करथि मार्किंग क्रिएट कर तो आम कहते कौन टूल मार्क सो यहाँ को तुम्हें कहीपर टूल मार्क स्ट्रक्चर तो फास्ट हूँ आमर कहती बाउंस मार्क बाउंस मार्क कौन तो ये कौन भी सेडिमेंट it will approach the surface at low angle
and again bounce back to the flow direction. So it will approach the sediment surface at low angle and again bounce back to the flow. So low angle approach करिवो एठी बहुत वो करबा low angle approach करिवो कोनसी भी sediment it will approach the surface low angle produces small depression small depression produce करिवो then again bounce back to the flow. तो कौन का bounce mark. Then brush mark, similarly it will also approach the surface at a very low angle. It will also approach the surface at a very low angle and again bounce back to the downstream direction. But it will produce a ridge in the downstream side. It will produce a ridge in the downstream side. So first write down in case of bounce mark. Bounce mark, the sediment approach the bed at a very low angle. Sediment approach the bed at a very low angle and again bounce back to the flow. Low angle approach करे तापर से जहाँ भी छोटो डिप्रेशन प्रोड्यूस करे तापर अगेन से जीवो कोठी पुनी फ्लो को पड़े. देन सेकेंड होच हमरा ब्रश मार्क. ब्रश मार्क रे कौन हम से सेम जिनस तुम्हारा सेडिमेंट विल अप्रोच द बेड एट अ वेरी लो एंगल अप्रोच करिवो and again bounce back to the flow. Flow को bounce back करियो but it will produce a ridge on the downstream side रे गोटे ridge produce कर. एटा तार characteristic. Then prod mark. This one is your prod mark. So prod mark the sediment will approach the surface at a fairly high angle. Approach the surface at a or bed at a high angle, then again bounce back to the flow. Prod mark क्या होगा? It will approach the sediment surface or bed surface at higher angle. So अब तीनटा वाला marking, bounce mark, cross mark, prod mark. So bounce mark सब छोटा छोटा डिप्रेशन प्रोड्यूस करूँगा, मार्किंग प्रोड्यूस करूँगा. इसमें को डिप्रेशन न कोई खाली मार्किंग बोली पाए. सो बाउंस मार्क रे तुम्हारा सेडिमेंट अप्रोच करिवो लो एंगल ले अगेन बाउंस बैक टू द सरफेस टू प्रोड्यूस स्मॉल डिप्रेशन. Here also it will approach the sediment surface at low angle, produce a small depression but at a ridge on the downstream side. That's how we will distinguish between them. इधर टाइप से तुम distinguish कर परियो. तापरे रहिला prod mark रे higher angle ले approach करिवो, then again bounce back to the surface, produce a depression or marking. Hala tinda. Then comes to two types, that is skip mark and roll mark. Skip mark means any marking produced because of saltating effect of the sediments. So because of saltating effect means saltation action is move करछो तो डे जो ताले से आंसर मार्किंग टा हम एठी ठीक हबो तापर से ठीक हबो तापर एठी हबो स्किप ही चलियो ताको हम कोन स्किप मार्क बोली कहबो. जदी इट प्रोड्यूस बाय रोलिंग जोटा कि सरफेस क्रीपिंग एक्शन है बा क्रीपिंग एक्शन यदि मूव करी ताले से प्रोड्यूस करे रोल मार्क. तो सिंपली यू कैन राइट डाउन स्किप मार्क इट इज बिकॉज ऑफ सल्टेटिंग इफेक्ट and roll mark it is because of creeping it. Soul mark माने कौन? सोल माने कौन? सोल रो मीनिंग कौन? जोतार सोल कौन कौन? भाभी जोतार सोल रो मीनिंग तुमको पता इंग्लिश लेक्सिकल मीनिंग हो तो सही है. सोल रो कौन जोतार सोल? हाँ से ही बैठी होची कोठी होची मार्किंग टा बेस रे होची सेत पे आना का वाला सोल मार्क. सो एटा होची मार्किंग प्रोड्यूस एट द बेस ऑफ द बेड. सो ड्यूरिंग डिपोजिशन ऑफ द सेडिमेंट जदि गोटे कोर्सर सेडिमेंट थिबो
ताले ये गोटे को ए जगह डिप्रेशन करता तापर कोर्सर सेगमेंट टा गला पर ए जगह टा कौन हो फिल हो फाइनल सेगमेंट तो एटा गोटे डिप्रेशन कर दो सो सोल मार्क होचे यू कैन बी मार्किंग at the base of the bed आर मेन कैरेक्टरिस्टिक हो तुम सोल मार्क से जो ग्रुप कास्ट भी हो पार सोल मार्क गोटे है कि फ्लूइड कास्ट ना तुम ये जो मार्किंग गुरा भी सब सोल रे रही पार है तो सोल मार्क कौन इंडिकेट करे इट इज यूज्ड एज मेनली आर काम हो टॉप एंड बॉटम क्राइटेरिया टॉप एंड बॉटम क्राइटेरिया और मेन काम हो कौन यूज एज टॉप एंड बॉटम क्राइटेरिया पे एटा यूज कर सो सोल मार्क इट इज अ मार्किंग एट द बेस ऑफ द बेड प्रोड्यूस केमिति हुए यू कैन आल्सो एक्सप्लेन कि इफ देयर विल बी कोर्सर सेडिमेंट that will तुम जो कोर्सर सेडिमेंट इट विल सेटल डाउन टू द बॉटम सेटल डाउन टू बॉटम जीव ताले ए जगह से गोटे डिप्रेशन प्रोड्यूस कर पारिबो तो से डिप्रेशन तो माने गोटे तुम कि कादुरे गोटे कौन जिनस पकईदे से जो डिप्रेस कर ताको बाहर करदे से जगह पानी पशिज कि जदि सेटा बाहर करदे ता जगह जदि सेडिमेंट बसीगला ताले से गोटे सोल रे गोटे डिप्रेशन क्रिएट करे जोटा कि प्रोजेक्ट करता है लोअर बेड को कौन करता है लोअर बेड को प्रोजेक्ट करता है तो एटा भी तुम्हें कहि परिबो इट प्रोड्यूस एट द बेडिंग प्लेन कोड प्रोड्यूस है बेडिंग प्लेन रे प्रोड्यूस एट द बेडिंग प्लेन तो एगुरा सब हैला तुम्हारा मार्किंग स्ट्रक्चर जो तुम्हारा क्वेश्चन केबे सेमिस्टर पढ़िबो कि ब्रीफली डिस्क्राइब अबाउट द सेडिमेंटरी स्ट्रक्चर केबे लिखिबो नाही हम सारी परिबेनी अगर तुमको खाली मैकेनिकल अबिया पढ़ा हो केमिकल अच्छी बायोलॉजिकल अच्छी है मैकेनिकल भी सॉरी नहीं देखो मॉड क्रैक्स आर कॉल्ड एज योर श्रिंकेज क्रैक और सॉन क्रैक सो दे हैव ए polygonal appearance like this they have a polygonal appearance so you can say they produce due to drying of sediments sediment जब ड्राई हुए से प्रोड्यूस हुए अधिक सन हीट है सन अधिक हीट है जो सेडिमेंट तो नॉर्मली एगुरा सब आम जोटा कि तुम बिलर देखो है तो जोटी कि धीरे धीरे कौन हुए माटीटा फाटी जाए तो जो वाटर सब जगह पड़ेब खरा दिन देखिए एमती हुए जो वाटर सब जगह रिमूव हो जाए से श्रिंक कर जाए श्रिंक कर भितर कौन ब्रेकेज बा फ्रैक्चर प्रोड्यूस हुए आम कहते श्रिंकेज क्रैक जोटा कि ड्राइंग जो प्रोड्यूस हुए श्रिंकिंग जो प्रोड्यूस हुए से श्रिंकेज क्रैक कहुए सन क्रैक ये कहुए जेहेतु सन हेल्प करे थोड़ा टू ड्राई आउट द सेडिमेंट को ड्राई करिया तार क्रॉस सेक्शन होची इटा जे V shaped क्रॉस सेक्शन सो V shaped क्रॉस सेक्शन एवढा आसीबो तुम यदि कट करबा को एवढा V shaped क्रॉस सेक्शन आसीबो जदि कि टैपरिंग एंड जोटा अछि सेटा बॉटम हबो ब्रॉड एंड जोटा अछि सेटा हबो टॉप सो टैपरिंग एंड जोटा हला हमर कोन हबो बॉटम हबो ब्रॉड एंड जोटा अछि V हबो तुमरा टॉप हबो so it is used as top and bottom criteria so it can be used as top and bottom criteria so can be used as top and bottom criteria so that तुम deformation structure होते कहबो rain prints so rain prints it is simple that smaller depression produced because of rain smaller depression produced because of rain
यदि तुम वर्षा हुए कौन सफ्टवेयर सेडिमेंट उपर ताल से गोटे डिप्रेशन पड़े नॉर्मल तुम डे टू डे लाइफ देखते हो जो वर्षा हम टी बाली जब थी जगह टे डिप्रेस जाए बट दैट थिंग इफ इट इज प्रिजर्व विदाउट एनी योर डिस्टर्बेंस देन इट विल कॉल्ड एज योर रेन प्रिंट्स तो सिंपल तुम लिखिपर जहाँ रेन प्रिंट से इट इज प्रोड्यूस बाय रेन एक्शन जोटा कि तो रेन ड्रॉपलेट्स they will produce depression on softer sediments. Rain droplets will produce depression on the softer sediments. मेजर यदि सर यदि कौन से मिस हो वो पढ़ले मतलब पचार है ना तापर आसा बोमा सीक्वेंस सो बोमा सीक्वेंस और इट इज कॉल्ड जो टॉर्बिडाइट सीक्वेंस so produced in low to medium denser turbidity current हमारा कॉन्टिनेंटल सेल्फ तापर स्लो तापर ऐसे ये डीप सी तुम्हें ये बंद नहीं पार सेल्फ तापर यहाँ ये लगा स्लो एटा राइज आसो डीप सी तुम्हें कहीपर तो यू जहाँ सेडिमेंट डिराइव हुए सेल्फ रिजन रू से सब आसी सेल्फ ब्रेक बोली कहते कौन सेल्फ ब्रेक ये जगह डिपोजिट हुए तो एंगल ऑफ रिपोज बढ़ू कि कौन सी अदर रीजन हो तो ये जो सेडिमेंट रू ये था सडनली तलू खसी जाते सडनली तलू खसला मैंने बहुत स्पीड रे मूव करेंगे कौन करें बहुत स्पीड रे मूव करेंगे आपको कहते टर्बिडिटी करेंट कौन टर्बिडिटी करेंट गोटे वाटर मिक्सड सेडिमेंट्स फ्लोइंग डाउन ए स्लोप फ्लोइंग अलोंग ए स्लोप तो ये अधिक स्पीड रे मूव करे माने डिफरेंट सेडिमेंट कैरी करि परियो डिफरेंट साइज रो सेडिमेंट से माने कैरी करि परियो आसिकी जेतले प्लेन लैंड पळाइसिबो मा डीप सी रे कम प्लानर कंडीशन आइसबो डीप सी प्लेन हम तो ये जगह सब डिपोजिशन हुए कौन हुए डिपोजिशन में तो टर्बिडिटी करेंट का डिपोजिट हुए सीधे टर्बिडाइट सीक्वेंस कहना जदि डिफरेंट साइज रो सेडिमेंट मिक्स होइक अछि तरे डिपोजिट होबा अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी डिपोजिट होबा डिफरेंट लेयर्स माने प्रोड्यूस कर कोन डिफरेंट लेयर ताको हम कहते टर्बिडाइट सीक्वेंस बा बोमा सीक्वेंस सो बोमा सीक्वेंस मोर देखा हुए कोथ पई इन टर्बिडिटी करेंट देखा हुए इन द डीप सी प्लेन देखा हुए तो तार सीक्वेंस थाए चल आसो ग्रेडेड बेडिंग आसो कन्वोल्यूट प्लानर बेडिंग convolute bedding then again planar lamination pelagic cell बॉटम टू टॉप लिखाऊँ बॉटम टू टॉप तो जिते गोटे टर्बिडिटी करेंटा जिते सेटल डाउन हुए प्लेन लैंड रे से फास्ट प्रोड्यूस करे एट द बेस से प्रोड्यूस करो ग्रेडेड बेडिंग कौन प्रोड्यूस करो ग्रेडेड बेडिंग तापर प्लानर बेडिंग ठीक है कोर्सर ग्रेन वाला प्रोड्यूस करिवो सैंड वाला प्लानर ग्रेड प्रोड्यूस करिवो तापर कन्वोल्यूट बेडिंग हबो तापर ठीक आउट फ्लानर आउट फाइनर प्लानर लैमिनेशन प्रोड्यूस करिवो ता ऊपर तुमर रहइबा मराइन डिपोजिशन ताको हम पेलाजिक सेल बोली कहते डीपर मराइन डिपोजिशन को हमें पेलाजिक वर्ड यूज करते पेलाजिक सेल बोली सो इट इज द जनरल सीक्वेंस ऑफ योर बोमा तो कहते बोमा सीक्वेंस then comes to biological structure so biological structure this type of structure produced by obviously activity of plant and animal they are produced by activity of plant
an animal, or you can say organism. So they can be primarily divided into following types. You can say bio torbation structure, biostratification structure, bioerosion structure, coprolites. एगुला तुम कर सहित एनी ट्रेस फॉसिल, they all considered as your biological structure. So biological structure actually if you add the trace fossil part it will be very vast, that बहुत अधिक है ना. तुम्हारा ट्रेस फॉसिल डिफरेंट क्लासिफिकेशन अच्छे है ना. तुम खाली ब्रीफली सब कहीदेवी तुम क्वेश्चन पढ़ले तुम सेमती किसी बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर डिस्टिंक्टिवली केबे पढ़िबो ना. जहाँ पढ़ो तुम एकाथरे सेडिमेंटरी स्ट्रक्चर पढ़ो, बायोलॉजिकल पढ़ो भी अल्प मार्क पढ़ो ए भितर तुम लिखिपार. सो बायोटर्बेशन स्ट्रक्चर होची तुम नहीं पारियो बोरिंग सॉरी बोरोइंग, then these holes ये जो पार्ट रहा जो कौन सी ऑर्गेनिज्म ड्वेलिंग तंकर एक्टिविटी थाए से माने होल्ड करी रहंती ना गोटे डिप्रेशन प्रोड्यूस करी रहंती. तो सेगुरा सब जीवा हो बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर हमारे केमिति तांकर वे ऑफ लिविंग केमिति अछि. दे आल्सो कंसीडर्ड एज स्ट्रक्चर जोटा को बायोटर्बेशन स्ट्रक्चर कहते. कौन जिनस खोली की रहिबा आंसर बायोटर्बेशन स्ट्रक्चर. बायोस्ट्राटिफिकेशन स्ट्रक्चर तुम दुईटा आसो गोटे स्ट्रोमाटोलाइट्स. तो सब प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म आम पढ़ुं ऑर्गेनिज्म आम के पढ़ुं अप टू तुम 538 एभव भी तुम मिलियन ईयर एभव भी तुम पाइब. तो यहाँ हूँ बहुत पुराना स्ट्रोमाटोलाइट्स इट स्ट्रक्चर भी कंसीडर कराए इट इज फोसिल भी कंसीडर कराए. तो जो आल्जी थाए जो फर्स्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म से पूरा आल्जीर कैपेसिटी इट कैन बाइंड सेडिमेंट्स ता देहर कौन सेडिमेंट बाइंड है जो बाइंडिंग इफेक्ट जो से स्ट्रोमाटोलाइट प्रोड्यूस करे लेयर बाय लेयर तुम स्ट्रोमाटोलाइट्स रे बाइंडिंग इफेक्ट सेडिमेंट्स पाइब. तो यहाँ कहते गोटे स्ट्रक्चर तक कहते बायोस्ट्राटिफिकेशन स्ट्रक्चर. ना तुम्हें ग्रेडेड बेडिंग भी पाइपर ऑफ बायोलॉजिकल ओरिजिन. हम डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर जो पढ़ुले कार्बोनेट सेडिमेंट जो पढ़ुले तारे गोटे टाइप ऑफ सेडिमेंट था फोसिल फ्रैगमेंट्स. सो फोसिल फ्रैगमेंट भी डिफरेंट शेप और साइज रही पारे जदि से इरोड होती जदि से इरोड होती ताले से भी गोटे ग्रेडेशन रे डिपोजिशन हो पारे. बड़ फोसिल बड़ फ्रैगमेंट तले रही ग्रेजुअली छोट छोट हो. तो सेमिति भी से बायोलॉजिकल ग्रेडेड बेडिंग प्रोड्यूस करते जो स्ट्रैटिफिकेशन अंडर आसे. बायो इरोजन स्ट्रक्चर है तुम बाइटिंग आसो स्क्रेपिंग एगुरा सब एनिमल माने करते बाइटिंग तुम कर ना कामुड़ देनु घर रागी थी क्या कामुड़ दू. बाइटिंग स्ट्रक्चर एग्जांपल छोटे भल अच्छी जो मैंने पेन कामुड़ दिखते देख पेन पछ येटा कामुड़ी पूरा तेज स्नेस करदे ना पेन कैप कामुड़ देते सब बाइटिंग. तो से जो स्ट्रक्चर से प्रोड्यूस कर जीव हूँ कौन बायो इरोजन स्ट्रक्चर. ना स्क्रेपिंग एक्शन थाए केतक खोली दिखती जो है ना केतक ऑर्गेनिज्म अच्छा पत्थर रे गात कर दिखती होल कर. तो से गुला सब इरोजन स्ट्रक्चर जीव है. कोप्रोलाइट्स हूँ फोसिल एस्क्रीटा और तुम कहीपर स्टूल फोसिल. सो स्टूल डिफरेंट तुम स्ट्रक्चर थाए
सब ऑर्गेनिज्म स्टूल डिफरेंट स्ट्रक्चर थाए सो दे कैन बी आल्सो कंसीडर एज ए सेडिमेंटरी स्ट्रक्चर सो सब ऑर्गेनिज्म स्टूल डिफरेंट स्ट्रक्चर थाए ना नहीं तो से सेगुरा सब फोसिल एक्सक्रीटा कहते कोप्रोलाइट्स तो ट्रेस फोसिल तुम आसो ट्रैक्स ट्रेल्स बरोज सब जगह कनसीडर कर ट्रेस फोसिल इवन इफ भी कोप्रोलाइट भी जाए ट्रेस फोसिल है कौन से ऑर्गेनिज्म खाली इंप्रेशन पाद चिन्ह जो कहते पाद चिन्ह हनुमान पाद चिन्ह अच्छी जो गोटे ट्रेस फोसिल कह गोटे डायनासोर फुटप्रिंट तुम पाच ट्रेस फोसिल कह कौन से ऑर्गेनिज्म को बाटे चलिकी गला तार पाद चिन्ह पड़ जाए कि कौन सी क्रॉलिंग गले सी गोटे लाइन प्रोड्यूस करे सो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो तुम कौन कहती मूवमेंट जो ऑर्गेनिज्म थाए सो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म मूवमेंट डिफरेंट थाए लाइक जदि गोटे लाइन पड़ी तार तुम भाव कौन सा जिनस कौन क्रॉलिंग इफेक्ट तू कह तू जाइए बोल लाइन पड़ो लाइन पड़े तू घोषारी तोते नहीं से अनुसार लाइन पड़ तू धर एठू केमी गलु तो जना पड़ो तो पाद चिन्ह पड़े तू चलिक गलु है लाइन पड़ो टोटाल तो किए घोषारी नहीं हाँ डिपेंड करे तापर पाद चिन्ह केते डेप्थ पर्यंत जाइए पाद चिन्ह केते डेप्थ पर्यंत जाइए से अनुसार तुम वेट भी जान राइट तुम कादुरे चली गले गोटे पर्टिकुलर सफ्टवेयर रिजन गले वेट अनुसार से पादर डिप्रेशन प्रोड्यूस कर ना तो ये सब इनफॉरमेशन इनडायरेक्ट इनफॉरमेशन कहुए यहाँ स्ट्रक्चर तो कहुए एगुरा आम अधिक यूज हुए हूँ कि फोसिल अधिक यूज कौन पाइब फोसिल जो थ्रू आम ऑर्गेनिज्म विषय बहुत जापर आम धर ये पक्का चली जाम कौन पाद चिन्ह पड़ुचे पत्थर पाद चिन्ह पड़ी रामकर धर कि जो गोटे गोटे कहते बिग फुट ह्यूमान मैंने आगुरी थे पाद चिन्ह धर कौन हार्डर जिनस भी से जो पाद चिन्ह पकड़ आम पकई पारे तो युरा सब जीव ये तापर ऑर्गेनिज्म डिफरेंट कंडीशन डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर प्रोड्यूस आम ह्यूमन हेले छिड़ा हेले आम जो भाया स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करिया बसिले से स्ट्रक्चर करिया शोले से स्ट्रक्चर करिया शोबार पुणी डिफरेंट टाइप अच्छे धर गोटे गाई है गाई देख गाई जदि छिड़ा जदि खाली छिड़ा तार फुटप्रिंट जो भाया थो चलु ता फुटप्रिंट अलग अच्छी गाई घास खाई जाऊ तार फुटप्रिंट अलग अच्छी है सबू को आज फोसिल हिसाब से कनसीडर करा गाई जब रेस्ट कर तार फुटप्रिंट अलग तार जो इंप्रेशन अलग आस गोटे गाई रेस्ट कर फुटप्रिंट अलग गोटे छेली रेस्ट कर गोटे बाघ रेस्ट कर समस्त कौन अच्छे कि लायन देखिए सी केमती रेस्ट करे देख ना नहीं समस्त रेस्टिंग कंडीशन भी अलग समस्ते रहिबा खाइबा सहित जो फूड कलेक्ट करती फूड गैदर करती तुम एनिमल प्लानेट पर ये सब डिस्कवरी चैनल देखिए समस्त डिफरेंट डिफरेंट टैक्टिक्स यूज करते है किए कौ भाया लुचिकी रहे सी भी फोसिल हिसाब से जीव जना पड़े सी कौ हिसाब से सी माने कौ प्रेडेटर लुचिकी रोचे कौन से ऑर्गेनिज्म जब अटैक हम सी कौन यूज कर ट्रिक यूज कर बचापी सी सब फोसिल तुम भाव बहुत डिफिकल्ट काम एगुरा बोली तुम जो कौन से ऑर्गेनिज्म को प्रॉपर कि ऑर्गेनिज्म जिनस देख तार ड्वेलिंग हैबिट देख आम यदि घरे रोच बड़ घर आमर कौन इंडिकेट कर कि आमर हाइट इंडिकेट कर केते हाइट रही छोट घर गोटे कुकुर को रखुच ताप छोट घर कहीं कर बड़ घर कर तो तापाई कौन इंडिकेट कर कि केते बड़ जगार दरकार जन को ड्वेल करने को से भाया तुम बनइब सापटे गात कर साप निजे गात करनी अलग गात रहे कि कौन सी होल देख तो होल जी बड़ ऑर्गेनिज्म से अनुसार से तार होल कर बचपे ना जो ठेकुआ गात कर रोचे से बड़ गात कर पिंपुड़ी कौन से बड़ गात कर छोट होल दरकार तादर तुम जापर ऑर्गेनिज्म साइज कौन से केमी रोचन
एंट्रांसटा हूँ बहुत इंपोर्टेंट आमर एंट्रांस ही डिपेंड करे कि आमर को केते हाइट आमर एक्चुअली मैक्सिमम केते आम 7 फुट 6 फुट कर कौन एंट्रांस मैक्सिमम जी 7 फुट हाइट थो मुंड बाज 7 फुट वाला हाइट बार घर जी कर सी तार अधिक बड़ कर डोर गुरा तो से तुम गले जना पड़े जे नाई एटा 7 फुट हाइट अच्छे तुम घर डोर घर गेट दीटा डिफरेन्ट कहीं हो कौन तादर एंटर कर घर गेटा बड़ कर कार एंटर कर अदर थिंग एंटर कर डोर पूरा छोट कौन कराए तुम पर्सनल एंटर कर से गुरा सब इंडिकेट करे कि कौन कौन तुम यदि घरटा मिल जाए पर एनालिसिस कर जना पड़ जो यही जिनस थी लाइक तेणु ये सब इनडायरेक्ट फोसिल कहते जो बायोलॉजिकल मीन्स आर बहुत बड़ क्लासिफिकेशन अच्छे लाइक जो बोरिंग है बोर है अबिका घर अच्छे घर पुणी डिफरेन्ट टाइप अच्छे तुम छोट एग्जांपल देखो कि आमर कौन सी जगार देखो एमती कि 2-3टा कमरा रोचे गोटे डुप्लेक्स घर रोचे गोटे आपार्टमेंट रोचे ये भी से भाया बरोज डिफरेन्ट टाइप अच्छे गोटे लंबा पूरा वाई सेप यू सेप भी सेप इरेगुलर सेप डिफरेन्ट सेप से प्रोड्यूस करते है तेणु से सब जिन गुरा कि केतक बरोज कौन पाई गात खोली कौन पाई रुहति प्रेडिटर मानू बचापी राइट तो ये सब जिन को सब फोसिल हिसाब से यूज कराए तो आम ब्रॉडर वे रे जीवा आवश्यकता नहीं कि तुम बीएससी लेवल रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं जहाँ अच्छे तुम एमएससी लेवल भी आदर क्वेश्चन बहुत कम आसे जोटा कि मुझे डिफरेन्ट हाबिट कथा ना ये जो ट्रेस फोसिल अच्छी आदर जो इम्प्रिंट्स ये सब पढ़ो तुम ए पैलेंटोलॉजी पढ़ है सो केमिकल स्ट्रक्चर these are produced by precipitation of chemical from a solution or precipitation of material from a solution हमारा जो सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट करे हम डिफरेंट वे ट्रांसपोर्ट करते तो वाटर इन्वॉल्व थाए तार मेकानिकली ट्रांसपोर्ट कर पारिबो केमिकली ट्रांसपोर्ट कर पारिबो केमिकली केमि ट्रांसपोर्ट करियो जहाँ डिजोल्व मटेरियल अछि जहाँ डिजोल्व मटेरियल हेकी थे ट्रांसपोर्ट कर पारिबो सो डिजोल्व मटेरियल गोटे सर्टेन थिंग रे तुम जति डिजोल्व करूछ गोटे पर्टिकुलर लेवल पर्यंत से डिजोल्व कर गोटे पर्टिकुलर आम कहते सैचुरेशन सैचुरेशन पर्यंत से डिजोल्व कर प्रेसिपिटेट हवा स्टार्ट कर कौन थिंग तुम्हें डिजोल्व कौन सब्सटेंस धर डिजोल्व हो गोटे कौन लिक्विड रे तो जो कंडीशन पे से लिक्विड डिजोल्व हो से कंडीशन न रही से प्रेसिपिटेट कर सपोज केतक डिजोल्व होती एट सर्टन टेम्परेचर से टेम्परेचर तुम कूल डाउन करदे से प्रेसिपिटेट हो सर्टन पीएच रे से डिजोल्व होती से पीएच आउ न रही से प्रेसिपिटेट कर सो तुम कार्बोनेट सेडिमेंटरी स्ट्रक्चर बा केमिकल स्ट्रक्चर तो कह पार इट इज प्रोड्यूस्ड बाय प्रेसिपिटेशन प्रोसेस कौन पे प्रोड्यूस पे प्रेसिपिटेशन फास्ट हो इट इज produced by precipitation प्रेसिपिटेशन जो प्रोड्यूस हुए तो जेहेतु आम ये डिजोल्व कथा कहते वाटर कथा कहते तो मोस्टली आम कनसीडर करवा कौन कि कैल्शियम कार्बोनेट कौन थो कैल्शियम कार्बोनेट तुम सिलिकेट भी हो पार सिलिकेट भी हो पार मोस्टली आम कैल्शियम कार्बोनेट कथा कनसीडर कर सिलिकेट टी हायर पीएच तुम पीएच पाखापाखि 9 पाखापाखि हेल्ले जाए से कौन डिजोल्व कर सो पीएच हूँ सिलिकेट अधिक हेल्ले जाए से अधिक डिजोल्व करे तो आम देखा ताले जो कार्बोनेट सेडिमेंट स्ट्रक्चर बा केमिकल स्ट्रक्चर इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स दीटा टाइप आसी वन आम कहते कंक्रीशन अदर कहते नोड्यूल्स गोटे कहुए कंक्रीशन गोटे कहुए नोड्यूल्स गोटे आम कहते कंक्रीशन गोटे कहते नोड्यूल्स सो कंक्रीशन नोड्यूल्स बोथ हूँ स्पेरिकल स्ट्रक्चर
सो एटा लार्ज spherical structure with internal structure internal तो एमती तो तुम्हारा कंक्रीशन एवढा होता है ना तो ठीक है लार्ज था स्फेरिकल था विथ तुम्हारा इंटरनल स्ट्रक्चर कंसेंट्रिक इंटरनल स्ट्रक्चर तुम कहि परिबो विथ कंसेंट्रिक इंटरनल स्ट्रक्चर नोडुल सूची स्मॉल स्फेरिकल हेतिबो तो कंक्रीशन हो लार्जर हेतिबो नोडुल्स हेतिबो स्मॉलर तो concretion it is produced by simple precipitation along pore spaces or more space within the grains. So it is produced by precipitation. It is produced by precipitation. But nodules are produced by replacement. रिप्लेसमेंट प्रोसेस प्रोड्यूस हुए तो गोटे होस्ट रॉक थी जहाँ डिजोल्व मेटल थी माने रिप्लेस करेंगे होस्ट रॉक सपोज गोटे होस्ट रॉक अच्छी जो थी कि तुम पोटासियम सोडियम एमती अच्छी है गोटे रॉक अच्छी जो कौन अच्छी पोटासियम सोडियम अच्छी डिजोल्व मेटल जहाँ सॉल्यूशन आसला तादरे कैल्शियम अच्छी तो कैल्शियम कौन कर होस्ट रॉक को पड़ेब सोडियम कौन कर सॉल्यूशन को या कहते रिप्लेसमेंट तो रिप्लेसमेंट प्रोड्यूस हुए नोड्यूल्स तो एग्जांपल तुम नहीं पार ये कार्बोनेट कंक्रीशन तुम सिलिशियस कंक्रीशन पाइब सहित तुम ये एग्जांपल नहीं पार सिलिशियस नोडुल्स मिलवे सिलिशियस नोड्यूल्स सहित मैंगानीज नोड्यूल्स मिलवे तो फास्ट लेख कार्बोनेट कंक्रीशन सो कार्बोनेट कंक्रीशन दीज आर कैन से कंक्रीशनल स्ट्रक्चर having calcium carbonate composition there are two types of carbonate concretion first one is your caliche. So caliche are you can say thin calcareous bodies. वो thinner था thin calcareous bodies on soil you can say or above soil that are produced in alternate wet and dry climate सिंपल सिमिलर जिन तुम देखी जो देख वर्षा दिने बहुत शिवली जाए खरा दिने देख से सब धीरे धीरे गोटे गोटे लेयर छाड़े पूरा पतला ही छाड़े तो से भाया सिमिलर स्ट्रक्चर अच्छे कैल्शियम कार्बोनेट हुए कैलिचे कौन कौन कैलिच जो अल्टरनेटिव वेट एंड ड्राई क्लाइमेट से एक्सपीरियंस जो कैलिच प्रोड्यूस हम then they together they will produce calcrete को हमें कौन थी these are called as dewey crust so that consists of interlocking crystal of calcite तो हम कौन थी dewey crust by you can also called as hard pan structure बहुत तुम्हारा स्ट्रॉन्ग था हाईली रेजिस्टेंस टू वेदरिंग था तो हमें ड्यूरी क्रस्ट बोली कहते देन तुम्हारा मैंगनीज नोडल्स सेमती नहीं दीज आर नोडल्स बट रिमेंबर कि मैंगनीज नोडल्स फाउंड इन ओशन बेसिन मेनली एटा कोन ओशन बेसिन ने प्रोड्यूस मिले तो एबे मैंगनीज नोडल्स बहुत इंपोर्टेंस अछि जोतरे कि मैंगनीज एक्सट्रैक्शन पई ताको मैंगनीज से टू एक्सट्रैक्ट करा जाउ जे ओशन बेसिन में ट्राई करा हो गोटे रही स्टाइलोलाइट्स जदि तुम कौन कार्बोनेट बेड कैल्शियम कार्बोनेट बेड इट इज सैंडविच्ड बिटवीन टू लेयर्स है
यदि मोर कार्बोनेट बेड sandwiched between two layer two layers तीटा लेयर भीतर सैंडविच एक रहे ताले because of pressure it will start forming solution because of pressure it will start forming solution हेले कोन अब धीरे धीरे खाई जीवो बा इरोड हे जीवो so carbonate bed जदि sandwich between two layers dissolve due to pressure तो प्रेशर जो डिवेलप हुए तब कहते प्रेशर सॉल्यूशन फेनोमेनन मेकानिज्म कौन करते प्रेशर सॉल्यूशन जोटा कि सॉल्यूशन प्रोड्यूस होची बिकॉज ऑफ प्रेशर सो डिजॉल्व हेले इट विल प्रोड्यूस ए सॉ टूथ लाइक स्ट्रक्चर so this bed after dissolve it look like a saw tooth ताको को जाय हमें ताको को जाय स्टाइलोलाइट कोड प्रोड्यूस हुए first is produced when is and tomorrow limestone bed or carbonate bed is sandwiched between two beds तो sandwich हेले को हबो because of pressure or तमे कहबा because of pressure solution phenomenon it will start to dissolve pore it will produce a sawtooth like structure ताको को जाय stylolites it is also a structure by you can say erosional structure by chemical action देखा तुम्हारा sedimentary structure complete